The calendar module gives a wide range of methods to play with yearly and monthly calendar. Okay, so there is a two method we're using. One method we're using. One is your calendar method, and which is used to show the calendar of a particular month. So for that we use import calendar, then calendar month, year and month. Now check. That is a program to show entire month calendar. Suppose now I show you 2000. It's showing you the current calendar. See there. So if you match your calendar with this one, it is completely matched. Okay. बुझला हर्षा, प्रियदर्शिनी, सोमेश. Yes, sir. Yes, sir. The ALT zone is an attribute of the time module. This is written a offset of local DST time. Okay, local daylight saving time. So that we are using ALT zone, means alternate time zone. You can use it as a showing the time zone. Okay, so the Python ALT zone is a attribute of the time module. This return the offset address of the local DST time zone in second. Okay, ଆମର जो local time zone ଅଛି DST time zone ତାକୁ ସେ second ରେ ସେ show କରିବ. Now show the program. So I write import time see that it is our time zone
in the form of a second. Okay, ALT time zone. तो always it is same. तो आम जो टाइम जोन अच्छे जोटा कि आम चेन्नई कोलकाता ये जो टाइम जोन अच्छे यहाँ -23400. If you change the time zone, ब्राउजर ओपन हो इंटरनेट रा नहीं हो टाइम जोन आम जो टाइम जोन चेंज करवा सेटा नहीं जाओ. ओके एटा हो डीएसटी टाइम जोन हमर नहीं छी. ओके एटा हमर डीएसटी टाइम जोन टा नहीं है. आम जो टाइम जोन ऊपर अच्छे से टाइम जोन टा शो कला. तो लिख हेड टाइम जोन एएलटी टाइम जोन लिख एएलटी जोन सॉरी. This attribute is used to return the offset of local DST time zone Sir, of local offset. Sorry, this return the offset of the local DST time zone in seconds west of UTC. West of UTC. Okay. Next is your sleep function. Sleep function or sleep method. Sleep method is used to pause a current thread of a current thread for a given number of seconds. If you want to stop your program or pause a process for a particular time period, then we're using sleep method. Basically, this sleep method comes from Java threading application. So here also, to stop or pause a thread for specific period of time, we're using sleep method. So Gibson heading sleep method. Sleep, then parenthesis. Sleep parenthesis.
So right, the sleep method is used to suspend or pause a thread for a specific time period. So to suspend or thread, A thread or sub process, thread or sub process for a specific time period. तो ये स्लीप मेथड रे गोटे प्रोग्राम देखौची तापर हमें नेक्स्ट टाइम मु देखिबी import time print immediately it is a message which is used for immediately printing immediately print, then after 3.4 second another value is print. Now check. Got it? बुझेला हर्षा सुमेश प्रियदर्शिनी Yes, sir. एठी हमें गोटे Yes, sir. पर्टिकुलर टाइमिंग दवा ए टाइमिंग रे हमर नेक्स्ट जिंस प्रिंट करियो जेमति कि हमें ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक जेतले बनैबा तार किछि टाइमिंग दोचे गोटे क्वेश्चन किछि ऑप्शन दोचे तो एठी भी हमें सेमते ऑप्शन देकी कर परियो सेही ऑप्शन वाइज रे हमको गोटे क्वेश्चन देखिया पुनी नेक्स्ट ऑप्शन आसला परे आ गोटे क्वेश्चन पे आसीबो इज वर्क ऑफ ए स्लीप मेथड. Okay, so next we start with the clock method. The clock method return the current processor timing. It return the clock method return the current processor timing as a floating point number expressed in second on Unix or any Windows operating system. The precision depends upon that the C function of the same name. Okay, so right.
This method return the current processor timing. This method returns the current processor timing. As a floating point number, expressed in seconds. Okay, so now I run the program. Time the clock method na. ଦିଟାରେ କାମ କରୁନି।
ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। एक्चुअली এটা abandon versionটা আছে। এটা হচ্ছে যে after model time has no attribute. रिमूव ହେଇଯାଇଛି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ରନ୍ କରୁନି, କେବଳ ଆମର ଏଇଟା ସ୍ଲିପ୍ ମେଥଡ଼ଟା କାମ କରୁଛି। ଓକେ, ତ ସ୍ଲିପ୍ ମେଥଡ଼ଟା ବୁଝିଗଲା ତ ଏଇଟା? ହ୍ୟାଲୋ, Yes, sir. ତ ଏଇଟା ଆମର ରିମୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ପୁରୁଣା Yes, sir. ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲକ୍ ମେଥଡ଼ଟା ରିମୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି। କ୍ଲକ୍ ମେଥଡ଼ଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରୋସେସର ଟାଇମିଂଟା ସେ ଶୋ କରିବ। ମାନେ ପାଇଥନ୍ 3 ରେ ଏଟା କାମ ଦବନି? ନା, এটা 2 ଭର୍ସନରେ ରହିବ, ଏଇଟା ରିମୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟଟା। 2.7 ଯୋଉ ଅଛି, ଯଦି ପୁରୁଣା ଭର୍ସନ ସଫ୍ଟୱେରରେ ପକେଇଲେ ଏଇଟା ପାଇବ। The next is ତାପରେ ହଉଛି ସି ଟାଇମ୍। Recording in progress. Recording in progress. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
रहुछि C time method converted time expressed in seconds since the epoch stream. Okay, the C time is what? I show you the program, then you understand what is this C time. Now let's understand it. First, I show you some other modules. Import time seconds equals to time dot time method. Then print second. Print second. Then when I run the file, it is converted the current time to a second format to the epoch time. ବୁଝିହେଲା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟା ଆମ ଶୋ କରୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଇପୋକ୍ ଟାଇମିଂ ଟା ମାନେ ଆମର ଯୋଉ 1970 ଯୋଉ ଟାଇମ ଟା ନିଆ ହେଇଛି से टाइम रु आजिका जो टाइम अच्छी ताको से सेकेंड फॉर्मेट रे कन्वर्ट करी देखेगा बुझी पारे ना बुझ पारे हाँ सर सर एटा आउ थरे 1970 होची हमर इपॉक टाइमिंग जोटा होची स्टार्टिंग टाइमिंग ओके तो से जो स्टार्टिंग टाइमिंग ए पर्यंत जो टाइमिंग अच्छी ताको से सेकेंड रे कन्वर्ट करके मते एटी शो करियो बुझिला टोटल 50 को सेकंड रे कन्वर्ट करला हां तो इटा 21 रे कन्वर्ट करी देखियो पूरा टाइम डॉट टाइम मेथड रे आ गोटे प्रोग्राम देखौची एटा होची टाइम डॉट टाइम मेथड आउ मेथड अछि गोटे नेक्स्ट सीधा ऑन करबो होची लोकल टाइम मेरे फाइल इनपुट कन्वर्ट करछि এটা होची सी टाइम सी द पास करले वैल्यूटा
second time c time scc देखो ए सेकेंड टाको अगेन मो एठी पैरामीटर सी टाइम पैरामीटर पास करी तो आज का डेट रिटर्न कला संडे मे 16 टाइमिंग पास कला बुझला बुझला 3 मिनिट पूर्व Yes, sir. एठी जदि मु किछि चेंजेस करिवि सपोज मैं लिखि 607 702 ए टाइम टा चेंज कर दे मतलब एटा ऑलरेडी चेंज कर दो 87 सॉरी मैं 9 पास करिवि एटा चेंज होला 41 एटा चेंज होछि एटा आउट चेंज करिवि तर 9 चेंज करिवि एठी जदि किछि चेंज करिवि एटा को 7 करिवि देखो एटा 20 हे गला बुझेला Yes, sir. सर वो जो टाइम टू टाइम हां सोमेश को सर वो जो टाइम टू टाइम था जो रिजल्ट शो करता को रिजल्ट एटा होची 1970 मसिया को आज कांस्टेंट टाइम हिसाब रे नियाइची पाइथन रे बुझे होची ता 1970 मसिया रो ए पर्यंत जो टाइमिंग ता अछि सेटा को गोटे सेकेंड रे कन्वर्ट करी मते को बुझेला मान सर 1970 मसरो आज जान जति दिन है सब तो सेकंड कन्वर्ट करछि सेकेंड रे कन्वर्ट इपोक टाइमिंग गोटे कांस्टेंट टाइमिंग नउची तो से टाइमिंग टा को मु कोन करी कॉपी करी के एठी पके देली देखो टाइमिंग चेंज हे गला माने एठी 17 पास करो एठी मोर 2024 हे गला बुझ पाइला अच्छा सर इपोक इपोक जोरा को जाय EPOCH सेटा कहबा हमें कांस्टेंट टाइमिंग बोल कहबा बुझला तापर नेक्स्ट टाइम हो जे GM टाइमिंग ओके तो तमें लिखो सी टाइम टा लिखो टाइम डॉट सी टाइम फंक्शन टाइम